Good evening, everyone. So I am Shivakumar Gangal from. I hope I'm audible. Just wanted to confirm before I start. Yeah. So good evening, everyone. I am Shivakumar Gangal. I cleared the Indian Forest UPSC Indian Forest Services examination in 2021. So I'm basically a mechanical engineer by background. I completed my engineering in 2018. This was my third attempt. In the first attempt, I didn't clear either civils or the forest services examination. And in the second attempt, I cleared only civil services prelims and I went on to write the mains examination, although I couldn't clear one. And in the third attempt, I cleared both the civils and forest services examination. And because I was passionate about forest and wildlife, and because I wanted to get into the forest services, I wrote only forest service examination in my third attempt. And fortunately, with the blessings of my parents and Almighty, I could clear the examination in my third attempt. So, so the credits for me clearing this examination should primarily go to my parents and my sister. There are a lot of other people who have actually helped me in clearing this examination. Due to the paucity of time, I don't really wish to take their names, but I would definitely like to attribute my success to a whole lot of other factors rather than just my own hard work. So, apart just to after the selection in 2022, the examination year is 2021, and the results came in 2022. And after the examination results came, we had to for the Indian Forest Services, you have to undergo the medical test as well as the physical test. In the physical test, you have to complete a duration of 25 kilometer for males in 4 hours. Once you're through with the physical test, you'll be done with the medical test, and then your final confirmation in the services will come. And after that, we underwent training for around 3 months and 10 days in Lal Bahadur Shastri National Administrative Academy in Mussoorie with all the other services, IAS, IPS, IRS, foreign services, and a whole lot of other central civil services as well. Uh, and our training in Lavasana got over in December 9, 2022. It started in August 29, 2022. Uh, and then once our training in Lavasana got over, we went to our respective parent training academy for the Indian Forest Services. It is called the Indira Gandhi National Forest Academy, which is based out of Dehradun, which is the capital of Uttarakhand. So the training was for 16 and a half months. It began in December 12th, 2022, and it ended on April 26, 2024. It was for a duration of 16 and a half months. After the completion of my training in IGNFA in Dehradun, we were sent to the field for our on-the-job training. So my cadre, I'm basically from Andhra Pradesh cadre. So I was during my probationary period on the field when I was doing my on-the-job training. I was posted in Nagarjun Sagar Srisalam Tiger Reserve in Andhra Pradesh, which also happens to be the largest tiger reserve in India. And once my on the job training got over, it was for 4 months. Then I went on to pursue postgraduate management, postgraduate diploma in advanced wildlife management from Wildlife Institute of India, Dehradun. I will delve more on this in further in the stream about the like how I could do this diploma. It was basically a fellowship from the government of India. It was a sponsored course from the government of India. I'll delve deeper into this aspect later. So I'll coming to this session about my preparation. I will briefly speak about the preparation strategy for each of the phase of the examination, be it preliminary, mains, and interview, both for the civil services and forest services. I won't really delve deeper into the each of the uh, stage of preparation. I'll just briefly give you because I'm sure you might have heard a lot of other civil servants who have addressed you in the past several days or weeks or months. So I'll broadly speak about the basics and fundamentals of each stage of preparation, be it the civil services or the forest services. So coming to the prelims, so the prelim strategy is roughly the same, both for the civil services as well as the forest services. The focus, the basic fundamentals will be the same, uh, whichever exam you're preparing for, वो चाहे civil services हो या forest services हो. So first thing, आप शुरू कर अपना प्रिपरेशन शुरू करने के पहले पहले आप सिलेबस देखिए, जो भी सिलेबस है सिविल सर्विसेज का, वो क्लियरली मेंशन्ड है यूपीएससी नोटिफिकेशन में। आप पहले सिलेबस जाके देखो, आपको हर एक टॉपिक जो भी दिया हुआ है सिलेबस में, वो आपको याद होना चाहिए।
तभी आप आगे जाके जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई भी आप सोर्स मटेरियल पढ़ते हो, तभी आप आगे जाके अच्छे से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसका इन्फॉर्मेशन। क्योंकि तो इसीलिए आप पहले सिलेबस पढ़िए। उसके बाद कमिंग टू द सोर्सेस, first and foremost, the basic and the fundamental building block of UPSC preparation is your NCRTs. So I'll speak about which NCRT to refer for which subject. So for history, I will suggest you to read both the old and new NCRTs. For the newer NCRTs, new NCRT, I mean the themes in Indian history. Those those books. And apart from that, there is one more book called Introduction to Indian Art, which will broadly cover the cultural aspect of the Indian history. So apart from the new NCRT, you should also read the old NCRTs. New NCRT problem kya hai? There are a lot of information in new NCRT, but they're not organized in a very sophisticated and refined way. काफी मतलब you pieces में है. You won't get the exact concept of history. So that's why I prefer and I suggest you guys to go through old NCRT. इसमें काफी अच्छे से एक फ्लो, रिदम और कॉन्टिन्यूटी है हिस्ट्री हिस्ट्री लेके, और कई बार क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से भी. So I prefer you to read both old NCERT and new NCERT. There's one more set of books called Tamil Nadu NCERT. You can refer that also. It's purely your choice. You can refer whichever you have been referring till now, or whichever you feel comfortable referring. Coming to polity, I don't suggest you to read any other book other than Lakshmikant. Lakshmikant should be your Bhagavad Gita. उसके ऊपर उसके नीचे और कुछ नहीं है. Like everything comes within Lakshmikant. If you're fully thorough with every single subject, every single topic of Lakshmikant, you're really gonna ace the polity part of the prelims examination, and even it's gonna help you in the mains preparation as well. So polity, there is no need of any other source other than Lakshmikant. पर आप polity पढ़ते वक्त अभी लक्ष्मीकांत के साथ-साथ आपको करंट अफेयर्स को भी कनेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी आजकल वाइस प्रेज़िडेंट इलेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा चल रहा है न्यूज़ में। सो यू शुड कनेक्ट द वाइस प्रेज़िडेंट एस्पेक्ट व्हिच इज़ अ करंट अफेयर विद द पॉलिटी सेक्शन, लाइक हाउ द इलेक्टोरल कॉलेज इज़ फॉर्म्ड, लाइक who all are the members, how do they how does the voting happen, all these things. These are the current affairs, and at the same time you should link that to the polity aspect. And at the same time there are a lot of current affairs issue like reservations and parliamentary standing committees of different subjects. You need to connect these current contemporary happenings with the polity aspect. So polity, you don't have to refer anything other than Lakshmikant. And coming to geography, for geography, you need to refer 11th and 12th NCRT. That is what I recommend. So one thing I want to make clear is, you might have heard and listened to so many other aspirants as well, but जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, these are the things that work for me. This may not necessarily work for you guys. I'm just trying to share my journey. So be flexible in the preparation. It's not that what I'm saying or what someone else told is the final. Whatever you have been referring, keep referring to that. And if there is any like urgent need for any modification, only then you have to make modification. Otherwise, just continue with whatever you're referring. So geography, 11th and 12th NCRTs. And again, uh, apart from the things that you're currently studying, apart from the like theoretical aspect which is there in 11th and 12th NCRT, you need to link the current affairs of geography. Like suppose I'll give you an example. Suppose particular river system in India, like suppose there is a flood happening in Odisha or West Bengal or Andhra Pradesh, you need to link the geography aspect of that, like which are the tributaries, distributaries, which where exactly is that river flowing, through how many states does that river flow, is it a west flowing river, is it a east flowing river. All these are basic fundamentals. So as and when you read newspaper, keep linking the contemporary happenings with that particular subject, be it geography, history, economy, polity, etc. So geography, 11th and 12th NCRT. I don't suggest you to read any other book other than 11th and 12th NCRTs. And coming to international relations, um, environment, forest, wildlife, these are very current affairs oriented subjects. I don't really prefer or suggest you guys to read any particular book for this. You need to have just basics, fundamentals of international relations and environment, forest. Other than that, you don't need to know a whole lot of scholarly level things in order to like clear prelims examination. So
same, like just like said with I said uh, uh, just like what I said with geography, you need to link the contemporary happenings in the international affairs with the uh, contemporary happenings with what is going to be coming in the examination. Like currently, a lot of news with respect to Indo-America trade war, NATO alliances, Russia being one bloc. So many other things are happening. So you link those aspects with the you study these aspects and link that with the contemporary happenings. Uh, one more thing that I would like to mention is interconnect geography and international relations. So, suppose a country is being mentioned frequently in the international community, is frequently in the international news. So, you just identify where is this particular country, which are the bordering states, which are the rivers, prominent rivers which flow through this country. Is it surrounding any major seas or oceans like the Celtic Sea, Baltic Sea, Aral Sea, or some Black Sea, something like that. So, always try to connect the geography and the international part. Same goes with the environment, forest and wildlife part also. There are number of national parks, tiger reserves, and wildlife sanctuaries which keep coming up in the news. So you need to connect all these three: the national park aspect, the geography aspect, the river aspect, and the mapping aspect also. Keep interconnecting between the different subjects only. Suppose I'll also like to give example. Take the case of swamp deer. Swamp deer. There was a UPSC question about swamp deer some 2 3 years before. So swamp deers are primarily found in three parts of India. There are three subspecies of swamp deer. One is the hard ground Barasinga, which is found in Kanha Tiger Reserve in Madhya Pradesh, and there are two other subspecies. One is found in the northern India, basically in Jilmil Jil Conservation Reserve and Dudhwa and some other parts, and one is in the eastern India, which is primarily found in Kaziranga National Park. So if you come across swamp deer, you should be knowing the fact that there are three subspecies of swamp deers. Where are they found? Which are those tiger reserves or national parks where it is found? Which are the major river systems, rivers that flow through those tiger reserve? So, for example, take the case of Kanha Tiger Reserve. Swamp deer, which is found in Kanha Tiger Reserve. See the location of Kanha Tiger Reserve also. Don't just whenever you come across any wildlife sanctuary or national park, always go and see in the map. Go and search that particular reserve or park on the map. Where exactly is it located? Which state does it border? Which are the rivers which flow through that particular state? Are there any adjoining like the other tiger reserves or wildlife sanctuaries which happen to be a part of a corridor? For example, Khana. Khana is very close to Pench Tiger Reserve in Madhya Pradesh. They together they form a tiger corridor. Similarly, Khana is also uh, somewhat connected to Bandhavgarh Tiger Reserve and Satpura Tiger Reserve. You should know all these aspects, like the mapping aspect of things. That's how you'll be able to. That's how you'll be able to like address the specific demand of the question when it comes to UPSC prelims. So, and coming to economics, there is no one source. There are actually multiple sources. All you need to know is just the concepts. In economics, all that matters is concepts. You don't have to know uh, you don't have to run behind any particular book or source material as such. I would primarily suggest you to go with either Mrunal or Sriram IS, and there are so many other um, sources or materials in the market which might be beneficial to you and which you might already been referring to. It doesn't really matter. All you need to know is just the concept. You need to be very thorough with the concept, and that's how you'll be able to address the demand of the question. And same, the whatever the contemporary aspect of economy is happening with respect to Indian economy, American economy, international economy in general, you need to connect that with whatever theory you have studied in your economics, whichever source that be. So that's how you'll address the economy aspect. Other than that, for the science and tech, again, I don't really recommend you to read any particular textbook for science and tech. Uh, this is also primarily a current affairs oriented subject. So one suggestion from my side is, in if you purchase the online version of the Hindu, there is one specific column called the Science Daily, which the Hindu covers every single day except Saturday, and this is available only in the online version. So I suggest you guys to buy that online version of the Hindu, because in the hard copies, the physical newspapers that you might be buying, the Science Daily is not there. So buying the online version helps you to go through this Science Daily
So, and that will cover some bit of the science and tech portion for the prelims examination. So other than that, this is broadly with respect to the sources. There is not much with respect to the sources. For the prelims, it's simple. See, clearing UPSC or for that matter, UPSC prelims is it's mostly about keeping the thing simple. You don't have to run behind multiple sources. आजकल like market में बहुत सारे ऐसे different sources आते रहते हैं. हर महीना new source, new material आते रहता है with fancy covers like covers and labels and all. You don't have to run behind any of them. Keep your sources as limited as possible and try to revise as many times as is possible before the main prelims examination. You should have done at least 4 5 rounds of each 4 5 rounds of revisions of each subject. That is how only then you will be able to remember and exact and make certain intelligent guesses when you're sitting in the examination hall, because there is the syllabus is anything under the sun is the syllabus for UPSC, and you can't really cover every single aspect. You have to keep your sources limited, and only if you keep your sources limited you'll be able to make multiple revisions, and if you make multiple revisions you'll be able to remain confident in the examination. So that's one thing. Other than that, I'll also suggest you guys to take the mock tests also. It might be the mock test might be few months before the preliminary examination, or as and when you complete a particular subject. Suppose you're starting your preparation in June or July, and the preliminary examination will be in the next May or June. So you will complete history or geography within 2 months or something. As and when you complete the particular subject, take a mock test. Mock test will help you understand and help you evaluate where exactly you stand in the scheme of things, like how thoroughly you are prepared. So mock test helps you in that way. Always take a mock test at the end of each subject, evaluate yourself. At the same time, आजकल क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जानबूझकर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे मॉक टेस्ट को. So never ever get bothered by these scores in the mock test. Mock test is all about checking your state of preparedness. So अब जो भी पढ़ा है उसको, और वही क्वेश्चन सेम मान लो मॉक टेस्ट में आ गया और आप उसको करेक्टली जवाब दे पाए, दैट इज ऑल, दैट्स इनफ. यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच यू आर नॉट कवर्ड एंड यू डोंट नो द आंसर्स फॉर. वो मैटर नहीं होता है, जो आपको पता है और आप उसको सही किया, दैट्स इनफ. दैट्स ऑल इज नेसेसरी. बाकी, because as I said, anything under the sun is the syllabus for UPSC, and you can't cover every single aspect. जो भी आपको पता है वो आपको सही करना आना चाहिए. That will be enough to clear the examination. So mock test is one thing. And again, for the mock test, don't take it very seriously. Whatever the scores it might be, however low it might be, unless you are making serious mistakes, don't take it seriously. Whatever the scores are. So next one is PYQs. So once you're done with the mock test, always go through the previous year question paper of that particular subject, be it history, geography, polity, economy, whichever that is. Always go through the previous year questions. Again, this will also help you in evaluating how well you are prepared or how thoroughly you are prepared for that particular topic. And once you're done with PYQs, always try to analyze and assess why you got a particular question wrong. Analyze once you're done with the mock test and PYQs, you have to analyze those question papers also, not just by hearting or theoretically mugging up certain questions and answers. Always analyze your performance in each test. So like, sir, particular question you got it wrong, you have to analyze why you got it wrong. What made you falter? Like, is it because of the lack of revision? Is it because of lack of conceptual clarity? You should be able to answer yourself, like, why I got this question wrong. Same, when you get a particular question right also through intelligent guess, you should be able to evaluate for yourself why I got this question right. Because once you get into the habit of guessing it rightly through certain intelligent choices, then that becomes a pattern, and that will eventually help you in the final examination. Because in the final examination, it's all about making intelligent guesses, because irrespective of what sources you read, the questions are hardly going to come from any of those sources. It's all about mapping the different subjects, interconnecting, and then eliminating. You should be very good at elimination. Practice elimination. That's really going to help you in the final examination. So coming another aspect that I would like to address would be the current affairs magazines. In the current affairs of magazines, I don't really suggest you guys to read monthly magazines. Like,
there are different coaching institutions which cover which give their own monthly magazines like Visions, Insights, Forum IS, and there are so many other institutions. You don't have to waste time reading each coaching material. So what I did was I completed my basics, which was reading all these basic NCRT, Spectrum, Lakshmikant, and current affairs, which were in the Hindu newspaper. And once I was done with all of that, in the last 3-4 months of my preparation, I used to go through this final compiled current affairs, which is brought out by Vision, Sunya, and so many other institutions. You can refer whichever one. I would personally recommend you to go with either Sunya IS or Vision IS, because personally I like them more than other coaching institutions. So that's one thing. So current affairs, you keep reading Hindu newspaper every single day. You keep understanding the concept. Keep understanding the syllabus slowly. Try interconnecting them with each of the subjects that you read. And once you're done with all these subjects, take mock tests, go through previous year question papers, analyze why you're getting it wrong, and then read the current affairs. Make at least 3-4 revisions. That this much should be enough for prelims. I don't think anything else is necessary. Don't chase multiple fancy books and all, whichever new book which keeps coming in the market. Keep your, again, I would like to reiterate, आप जितना कम सोर्सेस रखेंगे उतना अच्छा होगा आपको रिवाइज करने के लिए. सो कम सोर्सेस रखिए जिसकी वजह से आप ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, or because of that you'll be able to remain more confident in the examination. So coming to the day of the examination, here, see, on the day of examination there are lakhs of aspirants who are writing this examination, and every single person has, most of the people have worked as hard as you and are as intelligent as you are. But what differentiates those who clear and those who don't is their attitude on the day of examination. You have to be very, very calm and cool. I would personally suggest you to have that don't care wala attitude. The जितना आप ज़्यादा ऐसे खुद को बोलेंगे कि आई डोंट केयर व्हाटएवर द रिजल्ट इज़, उतना ज़्यादा आप काम एंड कॉन्फिडेंट रह पाएँगे। आप बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस, नर्वस होके मैं इतना प्रिपरेशन किया हूँ, कैसे होगा? फाइनल में ये क्वेश्चन नहीं आए तो कैसे करूँ? इस एटीट्यूड से आप वहाँ जाओगे, तो जो जो भी क्वेश्चन आपको आता है, वो भी आप गलत करके आओगे। तो मेन क्या है, फंडा है फाइनल एग्ज़ाम में, काम रहो, जो क्वेश्चंस आपको आता है, जो डायरेक्टली आया है आपके सोर्स से, उसको सही करके आओ, and there will be some other questions which you may have to eliminate through intelligent guesses. And those intelligent guesses you'll be only able to make if you are calm. If you are anxious, if you are nervous on that day, you will end up messing it all. You'll completely mess it up. So be calm and be confident. That's the only mantra for the final day. And coming to CSAT, so I don't really recommend any particular textbook for CSAT preparation. मैं पर्सनली एजुटैप करके एक वेबसाइट आता है, आप यूट्यूब में जाके टाइप कर सकते हो। एजुटैप से जो भी सिलेबस है सीसैट का, आप इंडिविजुअली उसको टाइप करके एजुटैप के वीडियोस आप देख लो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो भी सीसैट का है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, एज रिलेटेड हो सकता है, कॉइन रिलेटेड, टाइम एंड एज का हो सकता है, जो भी टॉपिक्स है, once you once you're done with that particular topic, either through EduTap or any other YouTube video that you might have read or studied or whatever it is, you go to the previous year question paper, solve those questions. CSAT में जनरल स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना. सो कीप सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस. यू शुड बी लाइक, यू शुड, वो ग्रिप आ जाना चाहिए आपको, सॉल्व कर करके आपको एक मेंटल स्टेट ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी क्वेश्चन आए मैं उस इसमें कर सकता हूँ एग्जामिनेशन डे पे. और एक और चीज जो गलतियां करते हैं एस्पिरेंट्स यूजुअली इज, आइदर वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करके जाते हैं या फिर ओनली अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स पार्ट करके जाते हैं. डोंट डू दिस मिस्टेक. बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, एंड विच एवर इजी ऑन दैट डे ऑफ एग्जामिनेशन इन दैट पेपर उसको आप अटेम्प्ट कीजिए. ओनली फॉर कॉम्प्रिहेंशन और ओनली फॉर मैथमेटिक्स ऐसे मत प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हो कितना टफ होते जा रहा है. सो आप ओनली मैथमेटिक्स प्रिपेयर करके गए और मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा टफ आया, then most likely you are going to fail in the CSAT examination. And irrespective of how well you have performed in your GS1, जो जनरल स्टडीज का पेपर है, आप यू आर नॉट गोना क्लियर द एग्जामिनेशन. सो दैट्स व्हाई CSAT में, so what I was trying, so I forgot what I was saying. I, so CSAT में
जो भी वही इंडिविजुअल टॉपिक्स देखा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया, एंड अरिथमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए आपको। इक्वल इम्पोर्टेंस करके जाइए, वहाँ पे जो भी आपको आसान लगेगा, वो सॉल्व कीजिए। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट अराउंड 40-45 प्लस क्वेश्चंस इन CSAT, and in civil services, if you are wanting to if you are from arts background, and in that case you are ineligible for the forest services examination, and in that, even in that case, I would recommend you to go with at least 85 plus attempts. And if you are writing for the forest services, and if you're from general category, I would recommend you to attempt at least 90 plus questions, unless your accuracy is very good, which you would have found out through your mock tests and solving of previous year questions. I would attempt you to attempt more and more. So ज़्यादा attempt कीजिए, because you never know उस दिन पे कैसे होता है. So keep attempt more, 85 plus or 90 plus. So that is it for prelims. And coming to mains में I wouldn't be as elaborate as I was for the prelims strategy. I will just briefly speak about the main strategy, because optionals, because my optional, I don't know the optionals of so many of you who are watching this live video. So आप मेरे को Instagram में भी ऐसे मेरा खुद का चैनल है, आप you can text me personally also for your in case my and your optional match, then you can always message me in Instagram, and you can follow me on Twitter also, and you can like ask me certain questions in Twitter also. So my optional for civil services was anthropology, and I should honestly admit that I didn't prepare anthropology that well. And for forest services, my optionals were geology and agriculture. And both of these optionals, I took them at the last moment once I cleared the prelims examination. Usually अक्सर आता है कि prelims खत्म होने के बाद forest services के mains के लिए usually around 4 months बचता है, and उन 4 months में आपको दो optionals को cover करना पड़ता है, and it's very much possible. In the case of forest services, it's very much possible, provided your preparation is very streamlined and it's very well directed. तब definitely possible है. मेरा optional था geology and agriculture, and I was completely new to these subjects, and दोनों optionals को मैंने freshly prepare किया after the completion of my prelims examination. So certain fundamentals है with respect to mains answer writing, which applies both for civils and forest services. First one is having an integrated preparation. आप जब भी मान लो आप अभी स्टार्ट किए प्रिपरेशन, एंड आप हिस्ट्री खत्म किया, एंड आपने हिस्ट्री का जो भी प्रीलिम्स का पास्ट ईयर और मॉक टेस्ट ये सब सॉल्व किया, अब उसी के साथ साथ आप मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लो और उसको भी आप सॉल्व करो. द प्रिपरेशन शुड बी इंटीग्रल. यू कांट सेपरेट द मेंस प्रिपरेशन एंड प्रीलिम सेपरेशन. अब जैसे ही एक एक टॉपिक खत्म होगा, उसका उसका जो भी पास्ट ईयर पेपर्स है, उसको आप सॉल्व करके देखो, ताकि आप इवेलुएट खुद को इवेलुएट कर पाओगे कि आप कितने अच्छे से समझे और स्टडी किए हो, and get your answer evaluated from any one of your seniors or your mentor whoever that is. So one answers को evaluate करवाना भी उतना ही important है. Unlike in prelims जो जिसमें आप खुद ही evaluate कर सकते हो, मेंस में जब भी आप आंसर लिखोगे, आप एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड और अच्छे मेंटर के पास जाके अपना आंसर इवेल्युएट करवाइए. So and then the mock test, same goes with the mains as well. You should attempt the mock test for mains also, along with prelims mock test. The mock test which I'm talking of for mains, they shouldn't be done during the last 3-4 months of prelims examination. I'm talking about like when you suppose you complete a particular subject in June, July, August, September, October, November, till December, it's fine. Once you are done with, once the prelims examination approaches, suppose you're some 3-4 months away from the examination, then I don't recommend you to write the mains mock test. Once you have cleared the prelims examination, then you can be very rigorous and very like industrious with respect to your mains mock test. In mains, it's all about answer writing. The number of answers you write, the kind of evaluation you get for your answers, all of this is equally gonna matter in how well you're gonna ultimately write the examination, ultimately write the paper on your mains day. So finally, coming to the interview preparation. So interview preparation is ultimately, it's not the test of your knowledge. ये चीज बहुत सारे लोग आपको already बता चुके होंगे. It's not the test of your knowledge, it's the test of your personality. I'm sure most of you know that ये UPSC notification में भी अच्छे से लिखा हुआ है कि it's your test of your
पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी को आप अभी मेंस मेंस का रिजल्ट आ गया, आप क्लियर किए हो, अब पर्सनालिटी को तब नहीं जाके डेवलप कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज लाइक इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट स्टिल फॉर यूपीएससी यू शुड एटलीस्ट बी लाइक इन ट्यून विथ व्हाट द examiners or the interview board like expects from you. So interview preparation should also be holistic. अब जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे या कंटेम्प्रेरी न्यूज़ देख रहे हो, सो ट्राई लिंकिंग दैट विथ, so जो भी आप कंटेम्प्रेरी न्यूज़ पढ़ोगे, ट्राई लिंकिंग दैट विथ हाउ इंटरव्यूअर वुड आस्क यू। सो देयर लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज आल्सो अवेलेबल इन द इंटरव्यू। सो उसी के प्रकार खुद को आप ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके एक स्ट्रीमलाइन्ड वे में आप खुद को ही आंसर कर सकते हो। लाइक इट्स ऑल अबाउट रिफाइनमेंट। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक सीधा-साधा एक वन साइज़ फिट्स ऑल आंसर नहीं है। सबका अलग-अलग जर्नी है, सबका अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ है, एंड पर्सनैलिटीज़ हैव टेकन a huge amount of time to get shaped. So it's not gonna happen in 2 or 3 months. Interview preparation भी आप साथ-साथ में ही जारी रखिए, both for civils and forest services. Forest service के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो भी जिसके भी बैकग्राउंड जिस भी बैकग्राउंड से है, मान लो आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से है, या वेटरनरी बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो भी आपका उस टाइम का सब्जेक्ट था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बी वेरी वेरी योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है फॉरेस्ट सर्विसेज इंटरव्यू में, पर्सनली अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। एज़ ऑफ व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फेलो बैचमेट्स, मेरे को तो यही लगता है कि द फोकस ऑन द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज़ मोर इन फॉरेस्ट सर्विसेज दैन इन सिविल सर्विसेज, एंड थोड़ा टेक्निकल ओरिएंटेड होता है फॉरेस्ट सर्विसेज इंटरव्यू में, वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फाइनली मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ जस्ट broadly about Indian Forest Services. This is like whatever I told just now about the preparation, that is all what I did. And fortunately, with decent amount of hard work and some amount of blessings and luck, I could clear this examination. And I wish the very best for you also. And finally, what I would like to say is, thoda sa briefly, I would like to touch upon the Indian Forest Services as a career. So Indian Forest Services 19th century में ही ओरिजिनेट हुआ था। उस समय इट वाज कॉल्ड द इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड देन लेटर इट वाज स्क्रैप्ड, एंड इन 1966 थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट it became one of the three all India services along with the Indian Administrative Services and Indian Police Services. So इसमें like the career path is very well laid out. आपका promotions, pay scales, and like career opportunities are on par with IAS and IPS. To like most extent, it's on par. You have the opportunity to work in the government of India also across different ministries, and not just environment forest ministry. You can be like an additional secretary of education department, tribal department also, being a Indian Forest Service officer. So that way आपको equal opportunities है compared with the any other central civil services. So if anyone is from engineering background or from pure science background, I would seriously recommend you to like opt for Indian Forest Services as well, because it's one of the all India services examination, one of the all India services, and the promotion, pay scale, your like uh, your standing in the administration of the state, everything is on par with the other two services. So that's all, इतना मैं बोलना चाहूंगा, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। आप प्लीज आप अपना जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। मैं आपका क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आई विल टेक ईच ऑफ दोस क्वेश्चंस। सो टेस्ट सीरीज कब देना है, वही बताया मैंने आपको, टेस्ट सीरीज कब देना है करके। आपका चॉइस है। देखो, दो तरह के यूजुअली दो चीजें यूजुअली लोग करते हैं, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट और एक फाइनल मॉक टेस्ट जो फाइनली लास्ट 3-4 महीने में दिया जाता है। मान लो अभी हिस्ट्री खत्म किया आपने, पॉलिटी खत्म किया, इकोनॉमी खत्म किया, या ज्योग्राफी एस्पेक्ट खत्म किया, इमीडिएटली वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उस सब्जेक्ट के रिलेवेंट टेस्ट सीरीज जो भी होता है कोई भी इंस्टीट्यूट का, आप उसको ले लो, सॉल्व करो, आप खुद को इवैल्यूएट करो कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, एंड वंस यू आर डन विद दैट, once you're done with your evaluation, अब then you can move on to the like final this thing, मतलब
पूरा ये साल का जो होता है, जो यूजुअली मार्च, अप्रैल, मई में होता है, वो कर सकते हो आप। And one question is about current affairs. The question is about the difficulty in retaining the current affairs. देखिए current affairs के लिए don't give so much of scope for current affairs. Means like please keep this in mind. Current affairs उतना ज़्यादा important नहीं है for prelims. Mains के लिए it is very important. Most of the questions come directly from the current contemporary happenings for mains. And interview also current affairs is very important. For prelims आपको उतना सारे चीज़ें याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। आप बस 3-4 बार रिवाइज़ कीजिए। अल्टीमेटली एग्जामिनेशन डे डे में आपको उतना मेमोरी का गेम नहीं है जितना इंटेलिजेंट गेसिंग और एलिमिनेशन का है। सो डेवलप दीज स्किल्स इंटेलिजेंट गेसिंग एंड एलिमिनेशन थ्रू मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उतना ज्यादा आप मतलब जो भी आपको एंग्जाइटी है कि हम पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा पर रिटेन नहीं कर पा रहे, उसका जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर दैट। अब मतलब honestly, any civil servant who has ever clear couldn't have possibly memorized and remembered every single current affairs that he has read. किसी से भी impossible है वो. So like be calm over that. It's nothing new. So coming to the previous year's question से questions repeat होते हैं क्या? So previous year questions इसीलिए ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप कितने अच्छे से किए हो और एक आपको डायरेक्शन मिलता है उसी सब्जेक्ट में, उसी टॉपिक में किस प्रकार यूपीएससी आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसका डायरेक्शन मिलेगा आपको। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसमें एक मतलब हैक मैं बताता हूँ जो मैंने किया था। जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा मतलब 2014 का 2015 में आया, उसमें 4 ऑप्शंस थे, 1 सही ऑप्शन है, बाकी 3 गलत थे। उन 3 गलत ऑप्शन जो भी दिया हुआ है, उसका उसके बारे में भी आप पढ़िए। कि 3 गलत ऑप्शंस जो भी है, उसके बारे में आप पढ़िए। कभी-कभी ऐसा हुआ है मान लो 2014 में एक क्वेश्चन था, उसका एक रॉन्ग आंसर था, वो 2019 या 20 में आया, उसी प्रकार रिपीट होके। ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हुआ है कभी-कभी। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को अच्छे से आप समझ के आप पूरा मतलब रॉन्ग आंसर्स को भी अच्छे से पढ़िए। ये कभी-कभी हेल्प होता है, एट लीस्ट इन एलिमिनेशन। एंड मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस था? सी मॉक इंटरव्यू भी इसीलिए आप खुद के कॉन्फिडेंस टेस्ट करने के लिए और खुद के पर्सनैलिटी कैसा है ये टेस्ट करने के लिए मॉक इंटरव्यू है। एंड देयर इज़ लाइक वेरी लेस सिमिलैरिटी बिटवीन द एक्चुअल इंटरव्यू एंड द मॉक इंटरव्यू। बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटीज़ नहीं है एक्चुअली। मॉक इंटरव्यू में अननेसेसरीली जो भी अवेलेबल मॉक इंटरव्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ड्रिल किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको मतलब रखा जाता है, वो एक्चुअली नहीं होता है इंटरव्यू में। मतलब फाइनल इंटरव्यू में दे विल बी वेरी कॉर्डियल, वेरी फ्रेंडली विथ यू। So don't be anxious about that. The board will be most of the boards are very cordial, very chill. Don't ever get stressed about those. And irrespective of how you perform in your mock interviews, evaluate yourself, do certain course correction, and be confident when you go to final interview. Don't at all panic. ड्रिल करके, स्ट्रेस करके आपको बहुत सारे उल्टे-मुल्टे चीज़ें ऐसे नहीं पूछा जाता है फाइनल इंटरव्यू में, जैसे मॉक इंटरव्यूज़ में दिखता है, ऐसा नहीं होता है। और हिंदी मीडियम के लिए सॉरी मेरे को लाइक एक्चुअली आई डोंट रियली हैव मच आइडिया अबाउट हिंदी मीडियम। मेरे को सच में नहीं पता हिंदी मीडियम के सोर्सेज़ और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। आई एम वेरी सॉरी। प्रीलिम्स के लिए वही अभी जो भी ये क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर रहे हैं 2026 में या जून में जब भी एग्ज़ाम होगा, तो अभी से ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट योर प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन एंड मेंस। जैसे मैंने अभी अपने जर्नी के बारे में बताया, योर मेंस एंड प्रीलिम्स प्रिपरेशन शुड बी इंटीग्रेटेड, सेपरेट-सेपरेट नहीं हो सकता है वो। अभी मैं प्रीलिम्स करूँगा, कुछ 2-3 महीने के बाद मेंस करूँगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों साथ में कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस के क्वेश्चंस देख लो और सिंपल रखो, इतना ही है। यूपीएससी क्लियर करना, यू डोंट हैव टू बी जीनियस, जीनियस रहने का ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के लिए इट्स ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, कंसिस्टेंसी एंड बीइंग एबल टू डू द सेम बोरिंग स्टफ अगेन एंड अगेन। इतना ही है यूपीएससी में, बहुत ज़्यादा ऐसे हाई-फाई चीज़ नहीं है कुछ भी।
जस्ट लिमिटेड सोर्सेस रखो, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, पीवाईक्यूज देखो, दैट्स इट। एंड तो नेगेटिव थॉट्स के बारे में, सी नेगेटिव थॉट्स इसीलिए आते हैं व्हेन यू आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड अंडर प्रिपेयर्ड। व्हेन यू आर डन विथ ऑल दिस फंडामेंटल्स, जब आप अच्छे से तैयारी किए हो, जो भी सोर्सेस, कोई भी मतलब जो भी टॉपर ने मेंशन किया, आप अच्छे से फॉलो किया, अपने स्ट्रैटेजी को सिंपल रखा, मल्टीपल रिविजन्स किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट किया हुआ है, एंड if you are done with all these things, there is high chance that you will be calm on the day of examination। तो उसके लिए मैंने यही बताया, एग्जाम के दिन काम रहने के लिए गो विद द डोंट केयर एटीट्यूड। मतलब मान लो मैं फेल भी हो जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। इस एटीट्यूड से जाओगे तो ज्यादा काम रहोगे। अब मान लो ऐसे एटीट्यूड से जाओगे, ये यही मेरा लाइफ है, मैं ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो दैट्स द एंड, ये एटीट्यूड से मत जाना, देन यू विल फील मोर एंग्शियस एंड मोर नर्वस। बहुत ही सिंपल, सीधे साधा चिल तरीके से जाओ, बहुत ही अच्छे से आप लिखोगे। तो ज्योग्राफी का नोट्स, मतलब ज्योग्राफी का पर्सनली मैंने तो नोट्स नहीं बनाया था। 11th और 12th जो भी एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़िए, एंड जो भी हिंदू में आ रहा है ज्योग्राफी के रिलेटेड, कोई भी रिवर हो गया, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट बाउंड्रीज हो गया, लाइक यही बेसिक चीजें जो होता है, कोस्ट्स हो गया, कोस्ट लाइन के बारे में हो गया, फॉरेस्ट कवर के बारे में हो गया, यही सब इंटरकनेक्शन होता है। प्योरली यही चीज ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये पढ़ो और और कुछ और चीज ऐसे पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कीप इंटरलिंकिंग वेरियस अदर टॉपिक्स विद इन देमसेल्व्स, ऐसा ही होता है। सो आई डोंट प्रेफर मेकिंग नोट्स फॉर ज्योग्राफी, जो भी टेक्स्ट बुक से उतना ही काफी है, और थोड़ा सा अभी द हिंदू जो भी आप पढ़ते हो उतना काफ़ी है, एंड फाइनली आप लाइक फाइनल पीटी 365 या जो भी फाइनल में पढ़ते हो, दैट शुड बी इनफ। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कुछ आ भी गया तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। डोंट वेस्ट योर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दोज़ काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, समवन हैज़ आस्क्ड, सो दिस वाज़ माय थर्ड अटेम्प्ट व्हेन आई क्लियर्ड। आई रोट लाइक थर्ड अटेम्प्ट में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुडन्ट क्लियर बोथ सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। सेकंड अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड ओनली सिविल सर्विसेज, और आगे जाके मैंने मेंस भी लिखा सेकंड अटेम्प्ट में, एंड आई कुडंट क्लियर। थर्ड अटेम्प्ट में आई रोट बोथ सिविल्स एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड बिकॉज आई वांटेड some kind of a field job, so that's why I chose Indian Forest Services। and once I got through the examination, बाकी ट्रेनिंग में जाके तो मेरे को और भी अच्छा लगने लगा ये सर्विस, and that's why I continued in the services, and I didn't give any thought of writing the examination again, because it's also an all India services, and I'm really enjoying the service as of now। एंड कोचिंग के बारे में ऑब्वियसली, कोचिंग एक डायरेक्शन, एक दिशा ज़रूर देता है आपको, कैसे प्रिपेयर करें। पर्टिकुलरली इफ आप बिगिनर हो, पहले बार आप यूपीएससी सिलेबस देख रहे हो, पहले बार ये सारे टॉपिक्स आपको नए हैं, देन कोचिंग विल बी बेनिफिशियल। बाकी आप थोड़ा-सा भी परिचित हो, आजकल यूट्यूब में या ऑनलाइन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कोचिंग का उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। पर आप बिगिनर हो और बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, देन कोचिंग विल डेफिनिटली हेल्प। एक डायरेक्शन तो आपको ज़रूर देगा। एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी टू गो टू दिल्ली, एज़ समवन हैज़ आस्क्ड, एब्सोल्युटली नॉट। स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माय साइड, ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली जाने का। आप जहाँ पे भी हो वहीं से प्रिपेयर कर सकते हो। आजकल इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन में, यूट्यूब में, जो भी आप टाइप करोगे गूगल में, यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से। सो नो, डोंट नीड टू गो टू दिल्ली एंड वेस्ट योर मनी। जहाँ पे भी हो वहीं से कर सकते हो। एंड इट देयर एंड समवन हैज़ आस्क्ड अबाउट मेकिंग नोट्स। पर्सनली मैंने तो उतना ज़्यादा नोट्स नहीं बनाया, बट इट्स प्योरली इंडिविजुअल डिसीजन। तो अब कितना नोट्स बनाना चाहोगे, किस सब्जेक्ट के लिए बनाना चाहोगे, दैट्स योर डिसीजन। उसके लिए मतलब आई कांट से यू हैव टू मेक नोट्स फॉर दिस सब्जेक्ट।
जो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम मेकिंग नोट्स। अल्टीमेटली व्हाटएवर नोट्स यू आर मेकिंग, वो कम ही पेजेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 400 पेजेस का नोट्स बनाओगे। यू आप उतना ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाए तो आप कभी भी उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन ही अल्टीमेट है। आप जितना भी पढ़ोगे, जो भी आप पढ़ोगे, अल्टीमेटली 4-5 बार तो आप मतलब दे 4-5 बार तो आपको रिवीजन हो जाना चाहिए। तभी आपको बेनिफिशियल होगा, तभी आप कुछ ना कुछ याद रख के एलिमिनेट कर पाओगे अल्टीमेट एग्ज़ाम में। इकोनॉमी का स्ट्रैटेजी वही बताया मैंने। इकोनॉमी के लिए कोई भी स्पेसिफिक सोर्स और ये नहीं है। इकोनॉमी इज़ प्योरली कॉन्सेप्चुअल एंड टॉपिक ओरिएंटेड है। पर्सनली मैं मृणाल और श्रीराम आईएएस को रेफ़र किया था। आप भी वही कर सकते हो, और जो भी अच्छा इकोनॉमिक्स का और भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यही करना है, इट्स ऑल कॉन्सेप्चुअल। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसको आप देखते रहो, करंट अफ़ेयर्स में क्या-क्या हो रहा है, उसके साथ लिंक करते रहो। दैट्स इट। इकोनॉमिक्स के लिए उतना स्पेशलाइज़्ड स्ट्रैटेजी ज़रूरत नहीं है। सो मेरा कोई बैकअप नहीं था एसएससी एंड आईआईबी। आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन इफ आई हैड नॉट क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, बट फॉर्च्यूनेटली आई क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, और मेरा कोई बैकअप नहीं था। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस टू हैव अ बैकअप। मतलब आप 2 अटेम्प्ट दे दिया, 3 अटेम्प्ट दे दिया, एक थ्रेशोल्ड रखिए आप खुद के लिए कि इस अटेम्प्ट के बाद मैं एक बैकअप ढूँढूँगा। ऐसा नहीं कि आप 7-8 अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल youthful years in preparing for UPSC examination, and ultimately it's possible that you might never clear the examination। ऐसा कभी मत होने दीजिए। एक बैकअप रखिए, और बैकअप कब चाहिए वो आप खुद ही डिसाइड करना चाहिए। मेबी इट माइट बी आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। आप खुद के लिए वो लिमिट सेट करो कि इस अटेम्प्ट के बाद मेरा क्लियर नहीं हुआ तो आई विल हैव अ बैकअप। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ऐसे लाइक हेल्थ एंड फिटनेस के एस्पेक्ट में भी किसी ने पूछा है, एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ ड्यूरिंग द फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। ऐसा कभी मत हो जाए कि मतलब आप प्रिपेयर करते रहे और पूरा आपका शरीर में मतलब कितना मतलब बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया, ऐसा सिचुएशन कभी मत पहुंचिए। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हैव गुड स्लीप, ईट गुड फूड। बहुत ज्यादा जंक वंक खाने का जरूरत नहीं है। रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम एज मच एज इज पॉसिबल। जितना मतलब फिजिकल कॉपी से पढ़ सकते हो उतना करो। नेसेसरी ऑब्वियसली डिजिटल, यू कांट रेजिस्ट यूजिंग डिजिटल मीडिया, बट लिमिटेड रखो। जितना हो पाता है उतना, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। इट विल ऑब्वियसली अपलिफ्ट योर मूड, इट विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, एंड इट विल ऑब्वियसली make you feel more confident and help your cognitive functioning also. Try to maintain some form of fitness routine at least for 30 minutes। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, just 30 मिनट्स। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉकिंग हो गया, थोड़ा सा माइल्ड जॉगिंग, रनिंग, दैट विल रियली हेल्प यू। मतलब डायरेक्ट टैंजिबल बेनिफिट्स नहीं है इसका, पर इन द लॉन्ग रन पता नहीं किसको कितना साल लग सकता है प्रिपेयर करने के लिए। इफ यू आर इन गुड स्टेट ऑफ mind, if you're in good state of health and fitness, obviously it will help your mind as well। so ये बोलना चाहूंगा मैं। सो इकोनॉमी के लिए अगेन सेम क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक आता है, उसको आप पढ़िए, और उसके साथ जो भी टॉपिक वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर नहीं करता है, उसको आप मृणाल से या श्रीराम अय्यर से जो भी और रेफरेंस मटेरियल है उसको पढ़िए। देयर इज नो वन पर्टिकुलर सोर्स फॉर इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड दैट पर्टिकुलर थीम। सो बीपी एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम के लिए, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने जो किया था, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो आता है 11th एंड 12th में, एनसीईआरटी उसको कीजिए, एंड स्पेक्ट्रम, बोथ ऑफ देम आर मस्ट। दोनों चीज़ें आपको करना ही है, ये आप करो। उसके अलावा और कुछ चीज़ें करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पीवाईक्यू, जो भी आप मॉक टेस्ट लोगे, उसमें भी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे कवर होंगे जो आप पहले कभी नहीं पढ़े हो, तो वो भी आप कर लीजिए। किसी ने पूछा है कि कैन मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट एथिक्स एंड ऑप्शनल बी कंप्लीटेड आफ्टर मेंस? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हो, उसके साथ ही प्रिपेयर करो। जो व्हाटएवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग, डू योर मेंस प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। डोंट बी लाइक आई विल डू दिस प्रिपरेशन ओनली आफ्टर माय
prelims get over, because you only have 2 or 3 months and you can't really do a lot of preparation because the competition is so high. You can't start from the scratch once, like only after you are done with your prelims. So mains को भी integrated रखिए and do it simultaneously. The ideally, once you're done with prelims, आपका जब भी result आता है until the day of mains examination, that duration of 2.5 3 months should be mostly for answer writing and revision. इसके लिए होना चाहिए. आप उस टाइम में जाके freshly अभी start कर रहे हो, then it's really not gonna help. सो अगेन कोचिंग के लिए कुछ लोगों ने पूछा है. सो आई पर्सनली डोंट recommend going to Delhi or any other city for that matter. If you really want to go, if you're really a beginner, if you're starting your preparation now, then you can go to any good coaching institute. It need not be in Delhi. It can be based out of Hyderabad or Bangalore. I personally did my coaching from Rao's IS in Bangalore. So मतलब मैं promote नहीं कर रहा हूँ, कोई भी coaching institute is fine. Only if you're a beginner. If you're already 2 or 3 years into preparation, then I don't think you really need any coaching institute. So I think that's it. Then I hope I have sufficiently answered some of your questions. और कोई नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक आई विल एंड. एंड फाइनली एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ कि एक फीलिंग ऑफ स्ट्रक करके एक पर्सन ने पूछा है कि लाइक प्रिपरेशन फेस में ऐसे टाइम आएंगे कि आप बिल्कुल भी स्टक फील करोगे. Things don't move, you don't remember, you start feeling very lonely, you start cursing yourself ki why did I get into this preparation journey. It's very very common. Trust me, most of the civil servants who have cleared and those who are toppers also across services, all of them have faced this, that like state of helplessness, some bit of like loneliness that's gonna be there. Your social life is gonna take a toll, but it's fine because the ultimately the result, whatever the, once you clear the examination, it will be worth it. Whatever sacrifices and sufferings you've gone through and have made for this examination, it will be worth it. जो भी आपको स्टक फीलिंग महसूस हो रहा है, दैट्स वेरी वेरी कॉमन, सबके साथ होता है. So that's why I recommend you to have some form of fitness routine as well. That will definitely help you to keep your mind fresh and more uh, माइंड को भी एक अजाइल रखता है आपकी फिटनेस रूटीन. सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू टू हैव एटलीस्ट सम 30 मिनट्स ऑफ some exercise in every single day. So एक और चीज़ है कि again same question but still I will take it again. But I am a beginner and should I go to Delhi or stay here? Again, like आप पहले बार यूपीएससी के दुनिया में एंटर हुए हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूपीएससी, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूपीएससी के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड योर बैकग्राउंड वाज आल्सो टोटली डिफरेंट. देन आई रिकमेंड यू टू टेक सम कोचिंग. But coaching need not be offline coaching. You need not go to that particular city, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai, whichever that city may be. You don't have to go to that particular city. You can do it from your home only. You can buy online coaching classes and just prepare from your home only. सो इट्स वेरी मच पॉसिबल. यू नीड नॉट गो टू एनी पर्टिकुलर सिटी. ऐसा कुछ भी नहीं है वन साइज फिट्स ऑल कि आप उधर जाओ या फिर ऑनलाइन लो. ऐसा सबका जर्नी अलग है, सबका स्ट्रैटेजीज अलग है, सबका जो भी रिजल्ट आए सबके लिए अलग है. मतलब सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके भी रिजल्ट्स अलग हो सकता है. सो दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन. बट मैं पर्सनली ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि यू गो टू दिल्ली एंड प्रिपेयर. किसी ने पूछा है कि आई एम डूइंग सीए इंटर्नशिप एंड माय अटेम्प्ट इज इन Jan 25. I think it should be Jan 20 in 2026. When should I start preparing? Yeah, the best time is now. The best time was yesterday actually, but the next best time is today. You should start today because another only 8 9 months of preparation time is all you have for the next year prelims, and you should be starting now. Uh, So one more question: is IRS your preference? So I particularly wanted to be in forest services, and that's why I ended up being in this service. Fortunately, I cleared the examination, and I am in Indian Forest Services.
I'm personally not a fan of IRS, but it's up to you. If you want, you can always opt for any of the civil services. There are like more than 20 different central civil services, and you can opt anyone based on your personal likingness, passion, and interest. Every service is doing great. Every service is contributing to the development and welfare of nation, and it's purely up to you. इकोनॉमी के लिए फिर से सेम क्वेश्चन आए। इन इकोनॉमी के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स करके एक टेक्स्ट बुक आता है, आप उसको पढ़िए। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स नहीं हैं। उस जो भी टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, उसको आप कवर सकते हैं मृणाल के द्वारा या फिर श्रीराम आईएएस या फिर जो भी और कोचिंग मटेरियल के थ्रू। एक सिर्फ़ उस टॉपिक को समझना एंड करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन व्हिच सोर्स और व्हिच मटेरियल और यू आर रेफरिंग और हाउ वेल यू आर मेकिंग नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये इतना मैटर नहीं है, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझना और इंटरकनेक्शन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So those, take one more question. The aspirants who are preparing from remote areas or for female aspirants. So why आजकल the social media is the information on social media is so extensive, so widespread, and so accessible to every single person that all you need is some internet connectivity, some good internet connectivity, irrespective of which corner of the country you're sitting in. And you can easily prepare for this examination. You just have to be confident and believe in yourself. It's very much possible. बहुत सारे अलग-अलग लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से, अलग-अलग स्ट्रगल से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो एनीवन कैन क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन। You don't have to be some extraordinary genius or brilliant to be able to clear this examination. Nothing like that. न्यूज़पेपर का नोट्स अगेन आई पर्सनली डोंट प्रेफर टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को जस्ट कनेक्ट करते रहिए अपने स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। अभी मान लो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया, उसको पॉलिटी के साथ ये करो, या मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टॉपिक आ गया, फ्रीडम मूवमेंट का कुछ भी ऐसे न्यूज़ आ गया, उसको स्पेक्ट्रम में कुछ मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करो। बस इंटरकनेक्ट करते रहो, डोंट मेक एनी पर्टिकुलर नोट्स। मेरा जर्नी है, like there are, I know many people who have made notes and are successful with that. I personally didn't make notes, and if you want to, you can make notes for that. So city for preparation, again, it doesn't matter which city you are preparing from, as long as you have good internet connectivity. इतना ही मैटर होता है आजकल के लिए। It doesn't matter whether you're preparing from Delhi, Chandigarh, Bangalore or Hyderabad, it doesn't really matter. So someone has passed 10th only recently, and is asking which is best, either humanities or science. पहले आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो you be clear about, you choose a subject which you are thoroughly passionate about, which you actually are interested in. Don't choose any particular graduation subject or your 11th 12th subject based on UPSC. UPSC बाद में आना चाहिए, पहले it should be about your career, and some graduation subject के साथ आप अच्छे से specialize होना चाहिए। तो and uh, that will also help you have a good backup in case you don't clear the civil services. So पहले आप, if you are in 10th standard or 11th standard, focus on mastering your 11th 12th and your graduation subject. उसके बाद आप यूपीएससी के बारे में सोचिए। अभी at this young age, I don't really recommend you to start preparing civil services from now on. क्वेश्चन एनालिसिस के लिए एक राउस आईएएस करके एक RAU IAS, राउस आईएएस का एक यूट्यूब चैनल है। उसमें करंट अफेयर्स का भी दे कवर, एंड उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से जो भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, उसको भी वो लोग कवर करते हैं। तो यू कैन रेफर राउस आईएएस आल्सो। उसके साथ-साथ एक वेबसाइट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम रोबोट करके एक वेबसाइट है। उसमें जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसके साथ-साथ जैसे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आपको आंसर्स भी आ जाएगा, देन यू कैन इवैल्यूएट एंड एनालाइज़ आल्सो। एग्ज़ाम रोबोट करके, यू कैन ट्राई दैट आल्सो। इंग्लिश अच्छे करने के लिए लाइक देयर इज़ नो वन स्ट्रैटेजी। आप मतलब ऐसा ही है, मतलब ऐसे वेल लेड आउट पाथ नहीं है कि ऐसा आपको इम्प्रूव करना है ऐसे करके। आप अभी से हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट कीजिए। कुछ-कुछ आपको समझ में नहीं आएगा वोकैब्युलरी,
सो आप उसको डिक्शनरी में देखिए, वोकैब्युलरी समझिए, स्लोली स्लोली वो बिल्डअप होते जाएगा। एंड वॉच सर्टेन डिस्कशंस, अब राज्यसभा टीवी करके पहले आता था, अभी आई डोंट नो। तो वॉच सर्टेन डिस्कशंस इन इंग्लिश ऑल्सो, द वे दोस पैनल स्पीकर्स, द वे दे आर स्पीकिंग, ये भी आपको हेल्प करता है कि कैसे बात करना है। सो उसके लिए उतना वो नहीं, मैं मतलब उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। जस्ट रीड न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप डिक्शनरी में देखो, कहीं नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो, स्लोली स्लोली होगा। अचानक मतलब आज आपने स्टार्ट किया तो 10 डेज के बाद यू वोंट बिकम एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश। इट विल टेक टाइम, स्लोली स्लोली कंसिस्टेंट रहो, तो देन यू विल इम्प्रूव। सो अगेन, टाइम, क्वालिटी टाइम वर्सेस क्वांटिटी टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। सो अगेन इट्स लाइक, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो, लाइक सपोज यू अलॉटेड योर सेल्फ 2 hours to finish a particular subject. So, one line of thought is that you should be able to finish that particular topic अच्छे से with proper quality. But it shouldn't be that you have allotted 2 hours for yourself, but you have taken 4 or 5 years to finish that subject. ये भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस रखो क्वांटिटी और क्वालिटी में। क्वालिटी को चेस करते करते इट शुडंट बी लाइक 2 hour का सिलेबस, 2 hour का टॉपिक शुडंट गेट एक्सटेंडेड टू 4 hours। वो बैलेंस आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। सो बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपरेशन, ऐसा कोई एक बेस्ट चैनल नहीं है। मैंने अभी सेशन में देखा और बाद में जाके भी आप देख सकते हो। मल्टीपल यूट्यूब चैनल से जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पफुल है, वो आप देख सकते हो। So number of hours of study also doesn't matter, as long as you are completing the topic that you wanted to cover on that day. As long as you're completing that, number of hours of study doesn't matter. But on an average, at least 6 to 8 hours to होना चाहिए. Don't be like I'll study 16 hours, 18 hours per day. That's practically not possible. You'll burn out and it's not sustainable also. Have an optimum balance of 6 to 8 hours. Focus on your health and fitness. Focus on your mind also. That will help you keep sustaining this journey for a longer period of time. So I think that's the end. I've taken most of the questions. Thank you so much for UPSC Time India for giving me an opportunity to address the queries of various aspirants, and as well as giving me an opportunity to share my journey. Thank you so much, UPSC Time India, and all the very best to whoever is giving this examination in the coming years. Thank you so much.